नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7 की कहानी यह मीत का के बारे में, जिसमें सहयोग और जिम्मेदारी की भावना को केंद्र में रखा गया है। हमारे साथ हैं शिक्षा विशेषज्ञ डॉ शर्मा। आप इस कहानी की मूल भावना को किस प्रकार देखते हैं? धन्यवाद। यह कहानी भी बच्चों को यह सिखाती है कि अकेले आगे बढ़ने की अपेक्षा जब हम मिलकर कार्य करते हैं तो न सिर्फ ज्ञान बढ़ता है बल्कि आपसी संबंध भी मजबूत होते हैं। शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानी में बच्चों को जिम्मेदारी लेने और एक दूसरे की मदद करने हेतु प्रेरित किया गया है, जो शिक्षा में बेहद जरूरी गुण है। सही कहा आपने। बच्चों के विकास में सहयोगी भावना का क्या विशेष महत्व है और क्या यह केवल स्कूल तक सीमित रहती है? सहयोगी भावना बच्चों को जीवन भर लाभ देती है। स्कूल में ये सीखा जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में भी जब बच्चे मिलजुल कर समस्याएं सुलझाते हैं तो उनमें आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। यह भावना आगे चलकर समाज के लिए भी लाभकारी सिद्ध होती है। अब जब हमने कहानी का मूल भाव समझा, आइए इसके व्यवहारिक उदाहरणों की बात करें। डॉ शर्मा, अगर एक बच्चा अपने मित्र की मदद करता है तो इससे उसके व्यवहार में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जब बच्चा मित्र की मदद करता है तो उसमें सहानुभूति, नेतृत्व और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है तो मित्र उसकी सहायता करके न केवल खुद को दोहराता है बल्कि दोस्ती को भी मजबूत करता है। इसी संदर्भ में क्या आप बता सकते हैं कि सहयोग और जिम्मेदारी की भावना से बच्चों में आत्मविश्वास किस तरह बढ़ता है? बिल्कुल। जब बच्चा किसी की मदद करता है या जिम्मेदारी उठाता है तो उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा महसूस होता है। यह आत्मविश्वास आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सहायक होता है। कई शोध बताते हैं कि ऐसे बच्चे निर्णय लेने में अधिक सक्षम होते हैं। डॉ शर्मा, अक्सर यह देखा गया है कि कक्षा में प्रतिस्पर्धा भी होती है। ऐसे में सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए? यह चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन जरूरी भी। शिक्षक को चाहिए कि वे समूहगत गतिविधियों के जरिए बच्चों को यह समझाएं कि मिलकर सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्यक्तिगत प्रदर्शन। उदाहरण के लिए, एक समूह परियोजना में सबका योगदान अनिवार्य होना चाहिए। क्या आपने अपने अनुभव में ऐसी कोई स्थिति देखी है जहां सामूहिकता ने बच्चों के प्रदर्शन को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बनाया हो? जी हाँ, एक बार मेरी कक्षा में बच्चों को विज्ञान मॉडल बनाना था। जब सभी ने मिलकर काम किया तो उन्होंने न सिर्फ नया सीखा बल्कि उनकी आपसी समझ भी गहरी हुई। इससे साबित होता है कि सामूहिकता शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि सहयोगी शिक्षा का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है। डॉ शर्मा, क्या आप बता सकते हैं कि बचपन में सीखी गई सहयोग की भावना भविष्य में किस तरह समाज को लाभ पहुंचा सकती है? बिल्कुल। जब बच्चे बचपन से सहयोग और जिम्मेदारी सीख लेते हैं तो वे बड़े होकर बेहतर नागरिक बनते हैं। उदाहरण के लिए, टीम वर्क की आदत से वे कार्यस्थल पर भी सफल रहते हैं। समाज में सहिष्णुता और समझ विकसित होती है, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ती है। क्या कोई शोध या अध्ययन है जो यह दर्शाता हो कि सहयोगी शिक्षा से बच्चों में दीर्घकालिक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं? जी हाँ, एक 2018 के अध्ययन के अनुसार जिन स्कूलों में सहयोगी शिक्षा पर बल दिया गया, वहाँ के छात्रों में आत्मविश्वास, संचार कौशल और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की दर बाकी स्कूलों से 30% अधिक पाई गई। यह स्पष्ट करता है कि सहयोगी शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। Today, we're exploring how storytelling can inspire students to help each other and become more engaged learners. Dr. Patel, can you explain why a teacher might choose a story to promote collaboration among students? Absolutely. Stories provide relatable scenarios, allowing students to see the value of working together. When a teacher narrates a tale where characters help one another, it creates a model for positive behavior. It's like planting a seed. The narrative gives students a clear example of cooperation, which they're more likely to imitate. That makes sense. How does this approach differ from traditional lecturing, where teachers simply instruct students to work together? Direct instruction often feels abstract, but a story embeds the lesson in real-life situations. For example, if a student hears about characters overcoming challenges by supporting each other, they're more likely to internalize the importance of teamwork than if they just hear work together as a command. So, in essence, stories transform the concept of collaboration from a rule to a lived experience.
Let's transition to the next aspect how these narratives build responsibility among students. Many stories emphasize students taking responsibility for one another's learning. Dr. Patel, how does encouraging students to teach their peers foster a sense of responsibility? When students are asked to explain concepts to classmates, they not only reinforce their own understanding, but feel accountable for their peers' progress. It's similar to the see one, do one, teach one approach in medical education, where teaching solidifies mastery and responsibility. Are there studies that support this peer teaching model? Yes, a 2018 study in the Journal of Educational Psychology found students who tutored others scored 30% higher in retention tests. This happens because explaining material requires clarifying one's own understanding, while also nurturing empathy and duty toward others. That's a compelling argument for integrating peer teaching into classrooms. As we move forward, let's discuss the emotional benefits students gain from this approach. Beyond academic gains, what emotional developments occur when students are encouraged to collaborate and support each other? Collaboration builds trust and empathy. When students help each other, they feel valued and capable. For instance, a shy student who assists a classmate might gain confidence and develop a genuine sense of belonging, which reduces anxiety and encourages participation. Is there evidence that such environments also foster compassion among students? Absolutely. A 2021 UNICEF report showed classrooms that emphasize peer support see a 40% increase in pro-social behaviors like kindness and sharing. These qualities are foundational for a healthy community and prepare students for collaborative workplaces later in life. It's fascinating how academic and emotional growth are intertwined. Let's now consider how these stories serve as a form of moral education. Turning to moral education, how do stories teach values like cooperation, responsibility, and love more effectively than direct instruction? Stories humanize abstract values. Hearing about characters who overcome obstacles together, take responsibility, or show compassion allows students to experience those values emotionally. It's like a flight simulator for morality students can practice ethical decision-making in a safe, imaginative space. Could you share a hypothetical scenario where a story might shape students' behavior beyond the classroom? Certainly. Imagine a story where a student helps a peer who's struggling, leading to both succeeding. Inspired, students may apply this in real life, offering support during group projects or even outside school, reinforcing positive social habits. That highlights the transformative potential of storytelling for moral development. As we wrap up, it's clear these narratives can fundamentally shape both academic and character growth in students.